So I hope you can hear me now because you could not hear me because I was on mute. So मैं ये कह रहा था कि आप में से कुछ लोग मुझे नजर आ रहे हैं और कुछ लोग नजर नहीं आ रहे हैं, और नजर ना आने की वजह ये है कि आपकी कैमरा बंद है। और आई अंडरस्टैंड बहुत सारे हजरात जो होते हैं वो पर्दा करते हैं, तो मुनासिब नहीं लगता पर्दा करने वाले हजरात को जो है कैमरा ऑन करने के लिए कहा जाए, तो इसलिए मैं नहीं कहता। सो अगर अलबत्ता if you really want to be a coach, or if you want to be a trainer, the first thing is you must learn to show up. It's like if you hide behind a camera, or if you hide behind anything and you expect to really shine out as a coach, as a trainer, forget it. These two things don't go together. So it's like, if you really want to be a coach, the first thing that you must do is you must practice showing up. It's not about looking good all the time. It's not about being good all the time. It's not about doing the right things all the time. It's about being present, when you have to be present. So आपकी जो सबसे पहली चीज होती है as a coach, as a trainer, is your presence. So it's like you must be willing to present yourself, okay, however you are. So हमारा आज का जो session है, during next 90 minutes, I will see whatever I can do for you. I'll take you through the basic ideas of what coaching is and what NLP is. अगर किसी को ये नहीं पता हो, we'll start that shortly. And it's like, how, if you want to be a coach, what you can do to become a coach. Okay, what are the conditions for becoming a coach, and not just a coach, but becoming a successful coach, becoming a coach, someone who really gets results for other people as well as for themselves. So that's what we'll be talking about. So I see there are many people here. So कहाँ से आप लोग? Can you just give me some idea कि किन दुनिया के किन हिस्सों से इस वक्त लोग यहाँ पे मेरे साथ connected हैं? If you can just type Lahore, Pakistan. Where in Pakistan, Khalid Anwar? Karachi, Pakistan, Peshawar, Karachi. We welcome everyone. Pakistan, Lahore, Karachi. So there are lots of people from Karachi, Hyderabad, Karachi, Quetta, Lahore, Karachi, Sahiwal, Islamabad, Karachi, UAE, Khairan, Islamabad, Karachi, Alok Kumar, New Delhi, Karachi, Jihlam. So, mashallah, Sakhar, Abdurrahman, क्या हाल है? Sahrish, Samnabad, how are you, Sahrish? Aftab from Sakhar, Kashmir. Muhammad Ali from Lahore, क्या हाल है? मुमताज पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाकर बैठे हुए हैं. Good to see you, Mumtaz. So I see a number of my old students and some new people. Those of you who may or may not know me, my name is Kamran Sultan. I'm a master trainer of NLP. NLP stands for Neuro Linguistic Programmer. I'm also a master hypnotist. I've been learning hypnosis. I consider myself a student. जो चीजें teach कर रहा हूँ, I've been teaching them for over 25 years. That's quarter of a century. I've been doing what I'm doing for over 25 years. I've been learning for more than 35 years now. But I consider myself only a student, and I'm just a student. I'm just learning. I know just this much. Okay, there is so much more to learn. I know just this much. I've worked with thousands of people, alhamdulillah, over the last 25 years. I'm also a firewalk instructor. Some of you may have seen my firewalk videos on YouTube or on Facebook. I am also a life coach, and I help people get, move in their life from where they are to where they want to be. So life coaching. How many of you here want to be life coaches? Walaikum assalam, Ruby. Kya haal hai aapke? It's good to see you. How many of you here want to be life coaches? I want you to type one, so I know that you want to be a life coach.
And how many of you are already doing some form of coaching, live coaching? So type 2 if you are already a coach, or you have taken some kind of training, or you just want to get better. So I see number of ones, twos, two, 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 two. I want to be a coach. One. Okay, so we have a, so we have some people who have some knowledge and some experience of coaching. There are some people who just want to be coaches. So I'll make sure कि मैं इस तरह से आपके साथ चीजें cover करूं कि everyone gets something. It's nothing, because as a coach, जब आप coaching, let's talk about some basic things, basic definitions first. Okay, coaching होती क्या चीज़ है, किस बला का नाम है, और ये NLP कोच क्या चीज़ होती है. So मेरे ख्याल से हम अगर चीज़ों को तोड़ के समझें तो चीज़ें समझना आसान हो जाती हैं. So first, let me just tell you quickly. NLP stands for Neuro Linguistic Programming. Okay, हमारी लैंग्वेज का हमारी ब्रेन, हमारी न्यूरोलॉजी और हमारे बिहेवियर पे जो असरात आते हैं, या हमारी लैंग्वेज का किसी दूसरे के ऊपर, उसकी सोच पर और उसके बिहेवियर पर जो असरात आते हैं, ये बेसिक्स NLP का मौजू होता है जिसको हम स्टडी करते हैं. और किस तरह से हम अपनी लैंग्वेज, अपनी गुफ्तगू, अपनी कम्युनिकेशन को शेप करके, तब्दील करके, हम जो असरात अपने अंदर पैदा कर रहे हैं या किसी दूसरे के अंदर हमारी वजह से पैदा हो रहे हैं, हम उसको कैसे तब्दील कर सकते हैं. तो बेसिकली इट्स अ बिग साइंस. NLP के जो ट्रेनिंग्स होती हैं, इसका जो सबसे पहला लेवल होता है ट्रेनिंग का, वो NLP प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग कहलाता है. प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग जो होती है, ये तकरीबन 70 घंटे की ट्रेनिंग होती है. सो मेरा आजकल प्रोग्राम्स चल रहे हैं NLP प्रैक्टिशनर. मैं प्रैक्टिशनर, मास्टर प्रैक्टिशनर दोनों साथ रन कर रहा हूँ. सो मेरा जो प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन वर्जन, वो 21 days की होती है. सो that's like 70 hours of training. Every day we have classes for like 4 hours, और sometimes उससे भी लंबी हो जाती हैं, 5-5 घंटे की भी हुई हमारी इस महीने में, पिछले महीने में क्लासेस. तो NLP की जो बेसिक ट्रेनिंग, जो सबसे, जब व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग, इसका जो फर्स्ट लेवल होता है वो प्रैक्टिशनर लेवल होता है. प्रैक्टिशनर के बाद जो अगला लेवल होता है, जो नेक्स्ट स्टेज होती है, वो मास्टर प्रैक्टिशनर. मास्टर प्रैक्टिशनर इज अबाउट मास्टरिंग प्रैक्टिशनर लेवल स्किल्स एंड गोइंग डीपर इनटू इट. उसके बाद जो उसका थर्ड लेवल होता है, दैट्स ट्रेनर. सो आपने जब फर्स्ट प्रैक्टिशनर कर लिया, मास्टर प्रैक्टिशनर कर लिया, एंड देन यू can start teaching. After you become a trainer, you can, if you want to be an NLP trainer, then that's the third stage. So NLP trainer ke baad fourth stage, which is the highest stage NLP mein certification ki, it's called master trainer. So I'm a master trainer. So practitioner, master practitioner, trainer, and then master trainer. ये 4 stages होती हैं NLP में certifications की. So जब आप start करते हैं NLP सीखना, you start from practitioner training. So दूसरा जो हमारी बात है कि life coaching. लाइफ कोचिंग क्या होती है. आप लोगों ने, हाउ मेनी ऑफ यू हियर आर क्रिकेट फैंस? ओके, टाइप 3 हियर. सो आई यू विल अंडरस्टैंड दिस मोर इजीली. कोई क्रिकेट फैन नहीं है यहाँ पे? क्रिकेट देखने वाले लोग तो होंगे, पाकिस्तान का मैच देखते हैं. सारे मेरे जैसे नहीं होंगे ऑनेस्टली. आई डोंट लाइक, मैं क्रिकेट के वो आखिर की 5 मिनट की जो झलकियां होती है ना, आई वॉच दैट. ओके, सो आई कैन टॉक अबाउट क्रिकेट विद पीपल. वो T2 का वो हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है. किसी से मुझे पता चला अभी रिसेंटली, वो कुछ हो रहा था जो अच्छा हो रहा है, चलो यूट्यूब पे सर्च करके आई जस्ट वॉच्ड. ओके, जो 5-5 मिनट की जो क्लिप्स होती हैं, आई डोंट हैव दैट मच स्टेमिना कि मैं टीवी के आगे सारा दिन बैठकर देखूं. 11 अजनबी लोग खेल रहे हैं जिनको मेरी एग्जिस्टेंस का इल्म भी नहीं है, जिनको ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं भूखा मर रहा हूँ या क्या हो रहा है मेरे साथ. ओके, वो वहां पर क्रिकेट खेल रहे हैं और मैं ये समझ रहा हूँ वो मेरे लिए खेल रहे हैं. और वो वहां पे उछल रहे हैं और मैं अपने घर में उछलता रहूं और मैं अपने दोस्तों के साथ झगड़ा करूं उन लोगों की वजह से जिनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता. Somehow it doesn't make much sense to me. So I'm not very intelligent, so I don't get into this. So coaching, it's like those of you who are into cricket or know cricket, कोचिंग का जो इनिशियली जो ये टर्म आई थी, ये आई थी स्पोर्ट्स से.
स्पोर्ट्स में कोचेस होते हैं, सो वी हैव अ कोच, अ bowling coach and a batting coach and a fielding coach, so we have coaches for players. एंड देन कोचिंग जो है ये वॉइस कोचिंग के अंदर आ गया कि जो सिंगर्स होते हैं उन लोगों के लिए जो आवाज की क्वालिटी के लिए उनकी कोचिंग होती है। देन ये चीज जो थी ग्रेजुअली ऑर्गेनाइजेशंस में एज एग्जीक्यूटिव कोचिंग के तौर पे आई, एंड दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट 1980s। एज थिंग्स डेवलप्ड, सो कोचिंग जो थी ये एक फील्ड ग्रो होते होते एक लाइफ कोचिंग किसमें आई, और आज लाइफ कोचिंग जो है इट इज वन ऑफ द fastest growing industries here in the US. So ये तकरीबन मैंने मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ फिगर्स पढ़े हैं। Somewhere it says it's a $1.4 trillion industry which is growing and going up to $2.8 trillion industry. I don't know exact figures, but I know for sure that it is a very, very rapidly growing industry. Almost every field में you will find there are coaches, life coaches, executive coaches. हमें कोचेस की जरूरत क्यों पड़ती है? ओके, होता क्या है कि हम अपनी जिंदगी में समटाइम्स हमारे साथ हालात होते हैं, वाकयात होते हैं, तरह तरह की चीजें होती हैं हमारे साथ जिंदगी में। हम कहते हैं जी ऊंच नीच आती रहती है, ओके, और उस ऊंच नीच में कभी हम फंस जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता, हमें आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा होता, और उस वक्त हमें किसी कोच को किसी गाइड की, किसी कोच की, किसी मेंटर की जरूरत होती है हु कैन हेल्प अस आउट। ओके, जनरली क्या होता है और होता रहा है कि जब हम इस किस्म की सिचुएशन में आते हैं तो हम किसी अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, किसी अक्सर अपने घर वालों से डिस्कस कर लेते हैं, किसी, एंड आई अंडरस्टैंड हर एक के लिए घर वाले भी अवेलेबल नहीं होते हैं, तो लेकिन हम कभी फ्रेंड से डिस्कस करते हैं। लेकिन जब हम जिससे डिस्कस करते हैं, और लॉट ऑफ टाइम्स जिन लोगों से हम डिस्कस कर रहे होते हैं वो क्वालिफाइड नहीं होते, और जो जो हमारा इश्यू होता है वो उसको उसकी डेप्थ का उनको अंदाजा नहीं होता। वो हमसे जरूर मोहब्बत करते हैं, वो हमारी जरूर परवाह करते हैं, वो हमारा जरूर ख्याल करते हैं, मगर उनको उस फील्ड का अंदाजा नहीं होता। आज से मोर देन 25 years ago when I started, तो मेरे लिए कि जो फील्ड थी एनएलपी की, एक बिल्कुल नई फील्ड थी। पाकिस्तान में इसको कोई नहीं जानता था, लिटरली चंद लोग आप उंगलियों पे गिन लें इतने लोग थे जिनको एनएलपी का लफ्ज भी पता था और उसके बारे में कुछ जानते थे, और जिन लोगों को पता थी अजीब अजीब खुराफात पता थी। तो बहरहाल जब मैंने स्टार्ट किया, और आई हैड लॉट्स ऑफ चैलेंजेस इन माय अर्ली इयर्स, तो मेरी जो क्लोजेस्ट दोस्त थे, मेरे साथी थे, वो मुझे कहते यार कामरान नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, मत करो, तुम अपना वक्त जाया नहीं करो, तुम छोड़ो इन चीज़ों को। लाइक मैं आईबीए में पढ़ रहा था तो मुझे मशवरा देते थे सीधा सीधा अपना एमबीए कंप्लीट करो, कोई अच्छी सी जॉब पकड़ो, लिव अ गुड लाइफ। बट समहाउ आई बिलीव्ड, आई न्यू कि ये हो सकता है, लेकिन मुझे कोई बताने वाला नहीं था। सो आई हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर्स इन माय लाइफ। आई हैड टू ट्राई अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, आई हैड टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस ऑन माय ओन, जस्ट स्टैंड अप फॉर चैलेंजेस। और लिटरली ऐसा होता था। सो फॉर एग्जांपल, हमने किसी कोर्स के लिए अखबार में ऐड दिया, ओके, इतना बड़ा ऐड, 10 centimeters 2 column का ऐड हुआ करता था, और अखबार में जब हम वो ऐड देते तो डॉन अखबार में उस वक्त वो ऐड कोई 30,000 का, एंड देन कहीं पे वो कि जी फलाने पेज पे लगाना है तो जी 50,000 का होगा, उसमें 50% एक्स्ट्रा। इट वाज रियली एक्सपेंसिव, और जेब में टोटल उतने ही पैसे हैं, वो सारे के सारे पैसे उस ऐड के ऊपर लगा दिए, होपिंग कि जब हम वो लगाएंगे तो विल गेट सम रिटर्न। और जब लगा दिया, पता चला उस दिन किसी पाकिस्तान में कराची में सियासी पार्टी ने किसी ने कोई कॉल दे दी, और पता जी शहर बंद पड़ा है, और समथिंग हैज हैपेंड, एंड कहीं पे कोई ब्लास्ट हो गया, एंड समथिंग हैज हैपेंड, एंड जो पैसे हमने लगाए थे वो पैसे के सारे डूब गए। एंड आई वेंट थ्रू दैट, नॉट वंस, नॉट ट्वाइस, मेनी टाइम्स, थिंग्स लाइक दैट हैपेंड। हमें ये नहीं पता था कि एडवर्टाइजमेंट में लाइक किसको टारगेट करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, एड्स के अंदर क्या चीजों का ख्याल करना चाहिए, लॉट्स, देयर वर लॉट्स ऑफ इश्यूज। So Behral, to cut the long story short, I learned a lot of things through those experiences. So coach जो होते हैं, so अगर if I had someone who could guide me, who could tell me, I would have saved a lot of money, and I would have saved a lot of frustration and a lot of time, okay, जो कि मैं उस वक्त नहीं कर सका।
इसी तरह कभी कभी हम अपनी पर्सनल लाइफ में हम कुछ किसी जगह पे कहीं स्ट्रक हो जाते हैं, कोई मसला होता है, कोई मामला हमारे साथ हो जाते हैं, हालात हमारे साथ हो जाते हैं, और वो हालात हमारी समझ में नहीं आता हम उसे कैसे हैंडल करें। तो एक कोच जो होता है, कोच हमारे प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं करता। ओके, दोज ऑफ यू हु आर कोचेस, how many of you realize this, that your job is not to solve other people's problems? Because I see a lot of people, Facebook पे बड़े coaches नजर आ रहे होते हैं, and they're like making big claims, and sometimes I really wonder, because I know I've spent my life in this field, and when I see someone who has just taken a few days course, and then they make the kind of claims they make on Facebook, you know I really feel, what are they doing? They don't know what they're talking about. लेकिन somehow होता है, एक चीज होती है डनिंग क्रूगर इफेक्ट होता है, हमने नई नई चीज सीखी होती है तो हमें पता नहीं होता है कि हम समझते हैं हमें बहुत पता चल गया। जितना हम ज्यादा सीखते हैं उतना हमें पता चलता है हमें कितना कम पता है, लेकिन जितना हमें कम पता होता है उतना हमें लगता है हमें कितना ज्यादा पता है। So so one of the things as a coach, one of your job is not to solve other people's problems. मुझे कभी कभी लोग अप्रोच करते हैं, दे से ये मेरा फलाना मसला है आप ठीक कर दीजिए। I don't do that. I don't solve your problems. That's not my job. Coach का काम is not to solve other people's problems, but to help people, find solutions of their problems themselves. Okay. So, and that's what my job is. So when we work with people, there are certain beliefs that we have about people, and I'm talking about coaches that I've trained and people that I work with. I don't know if everyone else follows this or not, because there are many people aaj zamane mein who are teaching these things, but I'm talking about people that I teach. When we work with people, we hold certain beliefs about people, and one of them is that every person is completely and totally resourceful. Every person has all the resources they need. It's just I use this example in my classes कि अगर फर्ज करो आपका बच्चा है या कभी आप बच्चे थे, तो जब आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं या आपके पेरेंट्स आपको स्कूल भेजते थे, जब आप स्कूल भेजते हैं तो आप उसको सारी चीजें तैयार करते हैं। सो आप उसको बैग भी देते हैं, बैग में यू मेक श्योर उसकी सारी किताबें भी हैं, कॉपियां भी हैं, पेंसिल भी है, कलर पेंसिल भी है, शार्पनर भी है, स्केल भी है, एंड देन यू मेक श्योर उसको लंच बॉक्स भी दिया है, उसको पानी की बॉटल भी दी है, एंड देन उसको कुछ पॉकेट मनी के तौर पे पैसे भी दे देते हैं, एंड यू जस्ट वांट टू मेक श्योर कि बच्चा जो है हमारे स्कूल में बिल्कुल कंफर्टेबली रहे। बच्चा कितनी देर के लिए स्कूल जा रहा है? 4 घंटे, 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए। ओके, बट हम अपने बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं चंद घंटे के लिए, तो हम उसको हर चीज देते हैं। जस्ट इमेजिन, थिंक अबाउट दिस। जिसने मुझको और आपको यहां भेजा इस दुनिया में, जो मुझसे और आपसे हमारी माँ से कहीं ज्यादा मोहब्बत करता है, जब उसने मुझे और आपको भेजा तो ऐसे ही भेज दिया होगा। उसने कोई तैयारी नहीं कराई होगी। सो हर वो रिसोर्स जो मुझे और आपको चाहिए उसने मेरे और आपके अंदर रखा हुआ है। वो मेरे और आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं मौजूद है। हमें जब जिस चीज की जरूरत हो, आप इस कायनात को देखो ना, कितना खूबसूरत निजाम है। यानी जिस इलाके में लोगों की जो जरूरत होती है वो चीज वहां पे आ जाती है। देखिए, आप देखेंगे कि हर हर इलाके की इंसान की जरूरत के मुताबिक वो चीजें वहां पर मुहैया होती हैं। अब इंसान ने अगर उसकी तरफ कोशिश ही नहीं करी, अब मेरे सामने दरख्त में फल लगा हुआ है, मैं उसको तोड़ू नहीं, तो दरख्त लगाने वाले का तो कसूर नहीं है, कसूर तो मेरा है। इसका ये मतलब नहीं है बाय द वे कि आप पड़ोसी के घर के फल तोड़ना शुरू कर देंगे, जी मेरे लिए लगे थे। बट द पॉइंट इज, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। बट द थिंग इज दिस, इट्स लाइक एवरी रिसोर्स दैट यू नीड to solve problems in your life is in you, in right inside you. You have never had excess. It's like, सोचो अब बच्चा जो इसके बैग में अम्मा ने लंच रखा था, लेकिन जब बच्चा गया, वो भागा दौड़ा अपना बैग लेकर, तो वो जो लंच बॉक्स था ना वो कहीं नीचे किताबों के चला गया। अब जब वो नीचे चला गया है, बच्चा स्कूल जाता है, जब लंच बैग अपना खोलता है लंच टाइम पे और देखता है उसको लंच बॉक्स नजर नहीं आता, तो वो ये गलत अजम्पशन करता है कि आज अम्मा ने लंच नहीं दिया, एंड नॉट रियलाइजिंग कि अगर वो अपनी थोड़ा सा किताबों को हटाए तो लंच वहीं पे मौजूद है। इन एग्जैक्टली द सेम वे,
हमें हमारे अंदर हर वो चीज जो हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो चाहिए, वो सलाहियत कहीं ना कहीं हमारे अंदर अल्लाह ने रखी है। लेकिन जो जिंदगी के हालात होते हैं, तो वो सलाहियत कहीं दब जाती है। अब जब वो दब जाती है, तो फिर हमें लगता है मेरे अंदर है ही नहीं। ओके। एंड जब क्यों मेरे अंदर है ही नहीं, तो फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकता। A coach, a good coach, a skilled coach looks what's inside you and helps you explore it. You know, he or she would help you clear your mental clutter so you can see inside your own self and come up with your own answers. Okay, so a coach will not spoon feed your answer. A lot of times people ask me questions and I tell people, it's like, if you have a question, go and search Google. मुझसे क्वेश्चन आप करने के बजाय, if you go and search Google, you will find your answers more easily, more quickly, okay, and in more detail, and from many different people. So that's not my job. I'm not Google. मैंने Facebook पे अपना स्टेटस भी लगाया था कि मेरे अजीज हमवतनों, मेरा नाम कामरान सुल्तान है, गूगल नहीं है. Okay, so don't search for, don't ask me your questions. If you have questions, go and, Google is, if I have questions, I would search Google. But I work with coaches not to ask them questions, but to clarify my own thinking, my own perceptions about things. And so yes, a coach needs a coach. So I do have coaches. I do work with coaches, and I work with many coaches. I work with many expensive coaches. So coaching me, that's one of the beliefs that we work with, is that every person that we work with has all the resources they need. It's just कि कभी कभी वो हमारे, it's like for whatever reason हमारे कहीं background में चला गया है. So as a coach, my job, and if you're working as a coach, and especially if you're my student, I teach you how to dig those resources from people, how to bring those things out, how to clear the clutter that they have put on themselves. So once you have removed someone's clutter, they start shining, they start seeing. It's like I was, मेरी आजकल जो क्लास चल रही है, I'm using a metaphor span. I was just saying कि देखो, it's like, जैसे first करो ये, it's like एक gold का, it's like है कोई piece है या कोई diamond है, इसके ऊपर जो है ना बहुत सारा कचरा लग गया है, गंदगी लग गई है. अब ये जो गंदगी लग गई है, इसके इफ इसकी जो वैल्यू है वो खत्म नहीं हुई है. इट्स स्टिल as important, it is still as valuable. The only thing is, it's like you need to clean this up. When you clean it up, it starts shining. So you as a person, मैं अपनी कल वाली क्लास में मैं स्टूडेंट्स को अपने कह रहा था, have you ever noticed this when we talk about ourselves? Okay, so when you talk about your hand, okay, how do you say? I want you to type that. Okay, अगर आप फर्स्ट करो कहते हैं अपने हाथ के बारे में बात करें, किसी को बताएं, what will you say? ये मेरा, this is my, what do you say? Right, type that. Yeah, this is my hand, this is my hand, this is my hand. Correct. Okay, that's what we say. We type, oh, this is my hand. Yeah. Okay, and if you talk about your nose, you say this is my nose. ये मेरी नाक है, ये मेरी कान है, ये मेरी आंख है, ये मेरा कान नहीं है, मेरी आंख है. ये मेरा कान है. Okay, ये मेरा हाथ है. Now here's the thing, अगर ये मेरा हाथ है और ये मेरी नाक है और ये मेरा कान है, तो मैं कहाँ हूँ? Because ये जो मैं, ये जो आप हैं, you're not this physical being. Okay, it's that metaphysical, non-physical being that you are from inside. बट उस नॉन फिजिकल बीइंग के ऊपर समटाइम्स हमारी वो जो सोच का जाल होता है, मैं कभी कभी यूं कहता हूं कि वो शैतान ने जो वसवसों का जाल हमारे इर्द गिर्द लगा दिया है, तो वो जो चीज है, इट स्टॉप्स अस, इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम being, doing what we can, and being the way that we can be, and it stops us from presenting us as best as we can be. Okay, so वो जो जाल है, a coach helps you clear that, so you come out and the good in you begins to shine. And when that happens, you find कि आपके लिए जिंदगी में परफॉर्म करना, किसी एरिया में किसी चीज, किसी रिजल्ट्स को हासिल करना आसान हो जाता है.
आपके लिए अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको दिखाना, इट बिकम्स इजियर. सो व्हेन यू बिकमिंग अ कोच, कोचिंग के अंदर there are certain things, and I'm specifically यहाँ पर बात कर रहा हूँ because NLP कोच के हवाले से. So there are certain things to become a coach. We need some कुछ ingredients होते हैं ना, हर चीज की तैयारी के पीछे कुछ elements होते हैं, and वो सारे elements मिलकर एक complete product सामने आती है. So if you want to become a coach, there are certain elements which are involved in becoming a coach, and those elements is the first is your mindset. With wrong mindset, a very skilled person with wrong mindset will not do anything. So, and a lot of times people spend their time in getting skills. Have you seen this, by the way? दुनिया में बहुत सारे qualified लोग होते हैं, really highly qualified, who never amount to anything. Who have seen people like that? Type Y, yes. Okay, बहुत qualified लोग didn't amount to anything, and not really qualified लोग but doing great. Have you ever wondered why? Because अगर एजुकेशन की बात होती, बेहतरीन एजुकेशन है, अगर एजुकेशन की बात, और उसके बाद फिर होता है क्या है, जब हमने अपने हिस्से का काम नहीं किया होता, हमने अपने ऊपर काम नहीं किया होता, तो सबसे आसान काम हमारे लिए होता है कि हम किसी दूसरे पे ब्लेम डाल दें. ओके, और हमारे लिए सबसे आसान काम नहीं, जी किस्मत की खराब थी. ओके, अब ये किसी ने हमें बढ़ने नहीं दिया, किसी ने हमें आगे, मेरा बॉस मेरा दुश्मन था, मेरे खानदान वाले, और दूसरा हमारे पास एक बड़ा अच्छा, मैंने पाकिस्तान में हम देखा है, बड़ा कॉमन है, बंदिश कर दी थी किसी ने, मामला ही खत्म हो गया ना. ओके, और फिर होता है कि हमें नजर लग जाती है बड़ी जल्दी. मैं कभी कभी ये बात लाइक सोचता हूँ, आपने कभी गौर किया है, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से वाकिफ हैं आप लोग? देखा है कभी आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को? ओके, so he was considered the most perfectly developed human being at one time, like physically developed. He was a bodybuilder for 7 years. He became Mr. Olympia and Mr. Universe and whatnot. He was like, and then a very successful actor and governor California में, a very 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 famous person. आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जो है, उसके इतने बड़े बड़े मसल्स हैं, okay? और वो इतने बड़े बड़े मसल्स के साथ अपनी तस्वीरें खिंचवाता रहा है और मूवीज में आता रहा है, उसको नजर नहीं लगती. और लेकिन हमारा जो है कि मुन्ना जो है ना, जाते हैं 3 दिन जिम, उसके बाद बनियान पहनी होती है, अम्मा फौरन नहीं, बेटा जल्दी से कमीज पहन ले, नजर लग जाएगी मेरे मुन्ने को. वो मुन्ने को बड़ी जल्दी नजर लगती, मेरी समझ में नहीं आता ये चक्कर क्या है. यानी मुन्ना जो है उसको लोग देख रहे हैं और उसको नहीं देख रहे हैं. Like, there is something, I'm sorry but I'm unable to understand. Okay, I know नजर बरहक है, but कॉमन सेंस भी एक चीज होती है. बट मुन्ने को नजर लगती है, आर्नल्ड को नहीं लगती. कुछ बात समझ में नहीं आती मुझे. ओके, मुन्ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी ने कहा. जी बिल्कुल, मैं आई कैन अंडरस्टैंड. सो इसी तरह हमारे ऊपर जो है ना, अब क्या होता है कि जब हमने अपने हिस्से का काम नहीं किया, तो सबसे आसान ये नजर लग गई. मैंने बड़े जी शुरू में बड़े उससे किया, मैंने फेसबुक पे आते ही मैंने स्टेटस डाला, ऐसे लोग मेरे पास आए थे, उसके पता नहीं क्या हुआ, नजर लग गई. ओके, या आई अंडरस्टैंड. ओके, मैं भी 25 साल से इसी नजर के चक्कर में फंसा हुआ रहा हूँ, और मुझे अंदाजा है, आप फिक्र ना करें, होता है. ओके, तो द फर्स्ट चीज होती है, एंड दिस इज अबाउट एनीथिंग दैट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, इज योर माइंडसेट. With wrong mindset, no matter how skilled you are, you'll not do anything. With right mindset, even if you are not that skilled, you will still be able to do. That's the first thing. Then mindset के बाद जो अगली चीज होती है, that's skill set. Okay. Now, I do have a really, really great mindset. And because with that mindset, I think I can perform heart surgery on you. I'm not skilled, but I have a really good mindset. So कितने लोग हैं हार्ट सर्जरी के लिए तैयार हैं? फ्री
हार्ट सर्जरी भी फ्री, बिल्कुल जनाब, और क्या चाहिए आपको? हार्ट सर्जरी फ्री करा रहा हूं, फ्री, एकदम फ्री हार्ट सर्जरी। सो एक भाई तैयार है फ्री हार्ट सर्जरी के लिए, मोहम्मद अली। ओके, सो फ्री हार्ट सर्जरी के लिए लोग तैयार हैं। ओके, जी मैं यहाँ पे नीम भी नहीं है, यहाँ तो हकीम है ही नहीं, बस माइंड सेट ही है खाली। ओके, बिकॉज आई कैन गारंटी रिजल्ट जो है, सी लाइक ऑपरेशन तो कामयाब होगा, मरीज बचे ना बचे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऑपरेशन कामयाब होगा इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ओके, हमने अपनी 9th क्लास में मेंढक की भी सर्जरी की है जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है, आप क्या चीज है। ओके, हमने तो बड़े बड़े मेंढकों को सही कर दिया है। ओके, अलबत्ता बचा मेंढक भी नहीं था। सो माइंडसेट के साथ द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड इज स्किल सेट, एंड देन स्किल सेट और माइंडसेट ये दोनों चीजें हो। बट इफ यू, अब दो चीजें हैं देखो, अगर आप इफ यू वांट टू बिकम अ कोच सो यू कैन हेल्प पीपल एंड कोच पीपल, यहां तक अगर खाली बात हो, ये दो चीजें विल बी गुड इनफ, you will survive. Let's say you're a manager working in an organization and you just want to, coach people within your organization, or you don't want to do professionally, a business in coaching, and you don't want to make money out of coaching. So your mindset or skill set will be enough. But if you want to become a professional coach, someone who offers his services or her services and get some money out of it, then you need third thing as well. And that third thing is what we call your business strategy. Because इन तीनों चीजों का, ये तीन वो एलिमेंट्स हैं, ये वो तीन चीजें जिसके कॉम्बिनेशन से you will be able to get the results you want. Now, there are certain things in this. For mindset, the first thing is your attitude. The problem in NLP, जो co-founder and Dr. Richard Bandler is one of my trainers, he says the problem with a lot of people is, and I'm like paraphrasing what he says, the problem with people is that rather than, when they have a problem, so rather than seriously acting, they act serious. Okay, so so I have a problem, I become serious. I'm not doing anything to solve the problem, but I am serious. I have a problem. Okay. Unfortunately, मेरे इस seriousness से मेरा problem solve नहीं होगा. Everyone has problems. I don't know anyone who doesn't have problems. अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला. अल्लाह ताला ने मुझे और आपको इस दुनिया में भेजा है ताकि वो देखे हम में से अच्छा अमाल कौन करता है, और उसका कैसे पता चलेगा? When we are tested. So we have challenges. Everyone has challenges. But if I become serious and don't do anything, it will not help at all. So NLP के बारे में, one of the things that Dr. Richard Bandler, the person who started NLP, says, NLP is an attitude. And it's, if you do it without the right attitude, you don't get results. It's the attitude that makes the biggest difference in NLP. So when you're using NLP or you're working as a coach, you must work on your attitude first. So when I'm teaching people, when I'm working with people, that's one of the things I teach people. I teach a lot of things consciously. I teach a lot of things unconsciously to people. So I install a lot of things in people. And those of you who are my students would know what I'm talking about. Those of you who are not will understand when you become my students. But attitude is one thing. Then attitude ke baad jo next cheez hai, and I'm talking about mindsets, that is your beliefs. The beliefs as a coach, your beliefs as a person. Okay. Beliefs kya hote hain? Beliefs, I'm not talking about religious beliefs. Your belief on yourself, your belief on what your services you're offering, the technology that you're applying, the skills that you're using, the strategies that you're using, your belief on all of those things. Okay, so attitude, belief, and then third thing is, let's see, clarity here in your mind. Okay, so this is the ABC of mindset.
attitude, belief, and clarity. So when you are, when you come to me and you want to become a coach, we spend a lot of time, almost one whole month, 8 sessions on developing these 3 things. Okay. Teaching you the right attitude. So you start operating with the right attitude and stop being so serious in your life so you can help other people, because now you are a coach. Okay. So you can be really useful for people because you are very serious about life and you can help people with serious problems. You must get out of this. Okay. So that's one of the things. It's like, and trust me, there was a time when I used to be very serious as well, because I also had some serious problems, but unfortunately my serious problem did not solve because I was serious. Okay. When you are, when you have the right attitude, so that's one of the first things that you learn. So when you're learning coaching with me, when you're becoming an NLP coach with me, so the 3 things that you learn, the first part of your training is about developing the right attitude, is about correcting and understanding your beliefs as a coach. There are a number of beliefs that you work with when you're working as a coach, and it's about developing more clarity in your life. Okay, more clarity in your head, more clarity about what you want to do in your life. So this is the ABC of mindset. And within these I can go further, magar yahan pe abhi itna time nahi hai. I'll just give you a brief idea is mindset ke andaz se bhi, to you'll get some idea. The next thing is skill set. You need a deep understanding of human behavior, how humans work. You need to bring all of the life experiences that you have. And then the third thing is the coaching strategies that you will learn. So different NLP strategies that you learn in program. हमारा तकरीबन 1 महीना जो है वो इसके ऊपर गुजरता है. So इसमें you learn all of those things. Okay. Now, and then हम जब बात होती है mindset change करने की, that can change quickly. Skills you can learn, and then through practice over time you can become good at it. जब बात होती है बिजनेस स्टैब्लिश करने की, I don't know anything. अगर आपको हो तो प्लीज मुझे बताइएगा. I will, if you teach anything like this, I will pay you whatever you ask. If you have something like this, कि आप मेरे यहाँ पे टुक क्यों करके टच करें और उसके बाद मेरी सारी बिजनेस के मसाइल जो है वो खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाए. ओके, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है. But what I know is this: if want to start a business, establish a business, get established in a business, it takes time. It takes time. Okay, and there are certain things that you need to do. So Nabila कह रही है कि yes, मेरे पास है. So Nabila, please show me your results and let me know where I can see the demonstration of your results. Because anything that I teach, I can show you, I can demonstrate. Okay, I don't speak. Okay, so Nabila कह रही है pineal gland को press करें, third eye open हो गया. देखिए, I don't want to get into this. But there is no such thing as third eye. Okay, so I've spent my life in this, and I've had hundreds of discussions with this about people claiming to have third eyes. यार मैं लोगों से कहता हूँ तुमने 2 आंखों से क्या देख लिया जो तीसरी आंख खोल के देखोगे. Well, that's a different topic. I don't want to get into that. But I have seen a lot of people wasting their times in things that don't exist, looking for something that doesn't exist. Okay. एक दफा मेरे पास एक साहब आए मेरे ऑफिस में, and उन्होंने मुझसे he claimed, I'm just like, I've heard lots of claims, and it's like, so a person came, he said मेरी third eye खुली हुई है. मैंने कहा अच्छा, excellent. So third eye से क्या होता है? मैंने कहा जी जमीन के जो खजाने हैं ना आपको वो नजर आने लगते हैं. मैंने कहा यार ये तो बड़ी मसला हो गया आपके साथ. अब कराची में तो आप जहाँ नीचे देखो तो गटर लाइन हर वक्त गंदगी गलाजत ही नजर आती होगी आपको. अच्छी नहीं लगी. एक और साहब ऐसे कहने लगे मुझे नजर आती. मैंने कहा अच्छा जी, हम बैठे हुए रूम में ना, सो मैंने कहा अच्छा ये जो मेरी दीवार है इसकी जो दूसरी साइड पे मेरा जो क्लासरूम है, सो कैन यू जस्ट डिस्क्राइब मी वो किस तरह का है? ही कुडंट डू दैट. सो आई स्टॉप बिलीविंग ऑन थर्ड आईज. बहरहाल दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. सो जो तीसरी चीज है, दैट्स द बिजनेस स्ट्रैटेजी. बिजनेस स्ट्रैटेजी के 3 पार्ट्स होते हैं. ओके, द फर्स्ट पार्ट इज बिजनेस प्लान. There's a saying I learned probably about 30 years ago. This is a saying by Zig Ziglar, and he said,
Nobody plans to fail, yet there are so many failures because people fail to plan. So businesses की जो fail होने की वजह होती है वो भी lack of planning होती है. So, I have this certificate now, I have this skill set, now I'll be successful in business. No, business needs planning. Business has some models to follow. You need some really good model. You need to create a model for yourself. You have to select a model from the available models and then go for it. Okay, so G Samira, so if you have that link, you can forward that link to anyone. I just see मैंने ग्रुप में जो लिंक सेंड किया था, if there are people who want to watch this, you can send it to anyone and they can watch that. Just a moment, let me see if I can do something. Can you guys please hold for a moment? I'll just pause here, okay? Okay, I'm sorry about that. अगर YouTube पे किसी को problem हो रही है तो I've just shared a link. Can you please, check it in the chat and share it with anyone who may be interested in attending this session on YouTube. मैंने इसीलिए अपने ग्रुप में कहा था कि ये Zoom में मेरे पास जो कैपेसिटी है दैट्स आई कैन टेक मैक्सिमम 100 पीपल, यहाँ पे 100 हो जाते हैं तो फिर Zoom जो है बाकियों को सॉरी कर देगा. So where were we? So we were talking about planning. So that's one of the things. So it's like when you want to start a business, any business. Okay, it's not about coaching. Any business, planning is the first thing. I coach a lot of people, and I come across people who say, sir, मैं जो कुछ business करना चाहता हूँ. Okay, great. क्या? No idea. Sometimes I come across people, it's like मैंने एक business किया और वो business fail हो गया. And I ask, अच्छा, so did you do some planning for it? जी सर मैंने बहुत planning की थी. Okay, क्या किया था? So जो सारा plan है वो उनके दिमाग में था. So they had nothing on paper. The whole plan was in their head. So it was not a plan. It was hallucination. And they thought it's a plan. Okay. And then hallucinations don't work. Plans do. In fact, you have to work your plans in order for your plans to work. But all they have is just hallucinations in their mind. And then they say, oh, it's like business mera thap ho gaya. Business thap nahi ho gaya because you never had a plan. Okay. So the first thing that you need is having a business plan. Coaching me, those of you, I come across a lot of people, I am very selective about my students. I don't take everyone in my classes. So I've had many times like people coming to my courses and they say like, I want to become a coach. Just see why? Because मेरे दोस्त हैं, मैं जब उनसे बात करता हूँ तो वो मुझे कहते हैं यार तुम्हारे अंदर वो है, तुम्हें कोच बनना चाहिए. तो मेरी जो जब से मैंने दाढ़ी रखी है तो मेरे कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं यार कामरान तुम्हारी जो है ना दाढ़ी तुम पे बड़ी सूट करती है, तुम्हें जो है ना मुफ्ती होना चाहिए. ओके, और तुम मुफ्ते भी बड़े शौक से खाते हो तो तुम बिल्कुल मुफ्ती सही लगोगे. तो लिहाजा मैंने मुफ्ते खाने वाला मुफ्ती में बन गया हूँ. सही है.
Make sense? Okay. You don't become a coach because two friends tell you that you are a good coach. Okay. Your friends are deluding you if you believe those friends. You don't become a trainer because some your friends, yeah, you know what, तुम्हें trainer होना चाहिए. Okay. The other mistake that you can make, oh, आजकल जो है ना वो coaching का business बड़ा अच्छा है, तो मैंने सोचा है कि ये कर लूं. तो कल को मुझे पता चला कि ये अचार का बिजनेस बड़ा अच्छा है, तो मैं अचार बेचना शुरू कर दूं. It's like, is this how you do it? This is your life. Okay, you don't plan that way. This is not how you do business. So the first thing, and this is what it's like you learn, and we spend a lot of time in developing this. So मेरे जो upcoming program है उसमें we'll be spending like 6 months in developing your business plan, your business strategy. Okay, and this is not something that you do in a day. मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली में किसी की शादी हुई हो, और जब आपकी शादी हुई हो तो लाइक द होल फैमिली प्लान फॉर इट, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, कहाँ पे अरेंज करना है, कितनी अरेंजमेंट होना है, खाना क्या होगा, लड़की के कपड़े क्या होंगे, दूल्हा के कपड़े क्या होंगे अगर लड़के की शादी है, एंड देन क्या जेवर होगा, क्या फर्नीचर होगा, इट्स लाइक गाड़ी कौन चलाएगा, दूल्हा की गाड़ी कौन चलाएगा, अगर शादी के अलावा दूसरे फंक्शंस हैं, यू हैव ऑल ऑफ दोस थिंग्स फॉर 1 day or 2 days program. इवन अगर आपके घर पे ईद बकरा ईद पे कोई दावत होती है, यू प्लान फॉर इट. बट आप एक करियर मूव कर रहे हैं, आप एक जिंदगी स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं जिसपे आप अपना फाइनेंशियल करियर बिल्ड करना चाह रहे हैं, एंड वो सिर्फ 2 दोस्तों ने बोला कि यार, इट्स लाइक वुड यू से वो 2 दोस्तों ने बोला यार वो लड़की तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी तो इस वजह से उससे शादी कर लो, तो मैंने इसलिए शादी कर ली, 2 दोस्तों ने बताया था उसके बारे में. अब मैं ढूंढ रहा हूँ दोस्तों को, मिले ना मुझे, मैं बताऊं उन्हें. उस वक्त फंसा दिया सालों ने. बट in your business, that's the thing. So when you start, that's the you need a good business strategy, you need a good sales strategy, and you need service strategies. All of these things combined make your whole business strategy. Because when you have the right mindset and the right skill set, you feel confident inside you. और ये जो कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये वो कॉन्फिडेंस नहीं होता जिसमें इंसान को यार मैं पकड़ा गया तो क्या होगा. ओके, लोगों को पता है आई एम एक्चुअली नॉट रियली दैट गुड. मैंने अपने सर्टिफिकेट की तस्वीरें तो डाल दी हैं, बट रियली आई एम एक्चुअली नॉट दैट गुड. अगर किसी ने मुझसे वो वाली पूछ लिया तो क्या होगा. This confidence is when you have the right attitude and right skill set, and you know what you can work with and what you cannot. This is authentic confidence. This is when you will, when you come across a situation, a case where you don't work, you will say, this is not my domain. I'm sorry, I can't work with this. Because you're being authentic. You're not trying to be a phony and trying to be this expert in everything and helping people with everything and resolving all of their problems. But you will be authentic. And you'll say, no, this is not my domain. So for example, if you go to my website, kamransultan.com, you will see I have it very clearly mentioned. I do not work with, schizophrenia, clinical depression, psychological issues, okay, OCD. I don't work with those things. So a lot of times people come to me with those kind of issues because they've heard about me. Kisi ne unko bataya. I've trained a number of psychologists and psychiatrists. Sometimes they send their clients to me. And if I find that this is something I don't work with, this is not my ego issue. I tell them this, I don't work with this. I'm sorry, I can't do anything. So it's like if I am a dentist and a person has a problem in their eyes, I cannot start treating their eyes because I have studied medicine. I'm a dentist. आंखें मेरी specialty नहीं है. In the same way, coaching में, when you know your skill set and when you have the attitude, this confidence that I'm talking, you will be authentic about this and you will refuse people who are not in your domain, and you'll be totally confident when you work. That is what will make you shine. You will not be phony.
जब आपका mindset and when you have right business strategy, you will find things become easier for you. You will flow. And when you have right business strategy and right mind skill set, you will make money. Okay, so how many of you get this? Can you tell me, does this make sense? Type yes if it makes sense. And even if you are watching it on YouTube, you can comment on YouTube. I'm checking your comments as well. Okay. Type yes, so I will know. जो YouTube पे transmission आ रही है, that's about I think 10 seconds, 20 behind this live transmission. So if you comment on YouTube, I will check your comments as well. So yes, 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 yes. Perfect. Now I have a lot of clarity in my mind. You're awesome, mashallah, alhamdulillah. Thank you, jazakallah. Yes, yes, yes. There's something here. I'm sorry, आप लोगों के जो सारे comments हैं इतने सारे मैं एक साथ नहीं पढ़ पाऊंगा. मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ कि मुझे ज़रा मुश्किल होती है पढ़ने लिखने में, तो ज़रा मैं कोशिश करके थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लूंगा. तो इसलिए बहुत ज़्यादा लंबे comments होंगे तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा. But I'll see what I can. Sir, what about those who have plan but their team is not properly working? The problem is with their plan. They did not plan to have the team. They did not, चलो इसको भी टीम में शामिल कर लेते हैं, उसको भी कर लेते हैं. Okay. And can you please show your slides again? The question is not can I or can, the question is will I or will I not? Okay. Now here's another thing. You know what? A lot of times people make this mistake. In my classes, अभी मेरी classes चल रही हैं, मेरे बहुत सारे students यहाँ पर हैं, and this is how I've learned. I tell people, it's like, don't take notes. Okay. This is about getting it in you, in your head. Here's the mistake a lot of people make. They think if they have it on the paper, they will have it. That's the mistake. If it's in you, you will not need it on the paper. Get it in you. Embody it. It doesn't show on your certificates. It shows in you. When you walk anywhere, people look at you, they say, whoa, this is the person I want to work with. This is the person. Not because you have a certificate, because you are being that way. But when people are with you, they're, whoa, there is something different in this person. That is what makes the biggest difference. लिख लें काम आएगा. Okay. It doesn't work that way, my friend. I'm telling you, I've trained thousands of people over last 25 years, and I keep learning myself. I attend lots of courses like जो mindset की मैं बात कर रहा हूँ ना, mindset के अंदर when you go further into this, इसमें there is something more in this, and one of those things is थोड़ा सा इसको माइंडसेट को एक्सप्लोर करते हैं. ठीक है, मैं बहुत ज्यादा इस पे नहीं जाऊंगा, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. माइंडसेट के अंदर जो सबसे पहली चीज हम खाली एटीट्यूड का अगर देखें, विद इन दिस एटीट्यूड देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स. द फर्स्ट थिंग इज, ओके, सो एटीट्यूड, बिलीव्स, माइंडसेट के अंदर तीन चीजें आ गई ना, क्लैरिटी. बट एटीट्यूड में द फर्स्ट थिंग इज असर्टिवनेस. नाउ without going into a lot of details, हमारे brain के ना different portions होते हैं. So we have the frontal lobe, and we have the midbrain, and then we have the reptilian brain. So these are like big chunks. I'll not go into any details of this. If you like study neurosciences, you will get that.
a lot of times हमारा, जैसे उर्दू में शायद हराम मगज कहते हैं, ओके, हमारा वो जो रेप्टिलियन ब्रेन होता है ना, वो इट टेक्स ओवर, and then we have fight, flight, freeze or fold kind of responses. Okay, या तो आप देखेंगे जो ऐसा गुस्सा दिखाएंगे, and I've seen countless people जो गुस्सा दिखा रहे होते हैं, बट उस गुस्से के पीछे एक सहमा हुआ इंसान, एक लिटरली एक सहमा हुआ बच्चा होता है. ओके, बाहर यूं गुस्से का उन्होंने खोल लगाया हुआ होता है, अंदर से क्यों सहमा होता है. Many times. So because they're operating from that, that primitive brain that every human being has. So either they fight or they want to run away. कोई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिंदगी के अंदर जब हम कहते हैं यार बस मैं निकलूं यहाँ से, just भाग, I just can't take it anymore. Okay, that's when we are operating from that brain. Then sometimes ऐसा होता है कि कोई चीज समझ में नहीं आती, कोई सिचुएशन हुई है, and we're okay, yeah. It's like I'm in that shock state, unable to do anything. I'm like stuck. Chauthi jo is like we fold. Okay, fight, flight, freeze, fold. These are four things जो कि हमारे primitive brain के हमारे operations हमारे हो रहे थे when it takes over. But हमारा जो mid brain है, हमारे जो memory based learning होती है, हम बहुत सारी चीजें जो हमने जिंदगी में एक्सपीरियंसेस से सीखे होते हैं, जो जिंदगी में हमारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनसे हमने बहुत सारी चीजें जो सीखी हैं, जो चीजें हमने अखज़ की हैं, वो सारी इधर होती हैं. एंड देन वी हैव दिस फ्रंटल लोब, यहाँ पे जो हमारा ब्रेन है ना, ये हमारे सारे इंटेलेक्चुअल, हमारी पॉसिबिलिटी थिंकिंग जिससे हम कहते हैं, इट ऑल ऑपरेट्स हियर. Once you learn to activate and operate from this brain, you find you're able to get more possibilities in your life. Okay, now we do not have perfect control over this, so it's like किस वक्त ये मेरा activate हो जाएगा, this is ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ सिस्टम है. Okay, I don't have any control. कि मैं आपको अगर ये बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है, हरगिज ये मत समझिएगा कि मेरा जो प्रिमिटिव या रेप्टिलियन ब्रेन है वो कामरान सुल्तान के अंदर काम नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है. Okay, it is there, it takes over. The important thing is, it's like how soon do I realize that I am here and I shift from here to here. That is what makes the difference. So जब हम mindset की बात करते हैं, being assertive is operating from a different mind, utilizing different portions of your brain, and rather than operating from that reactive thing. Then being totally and brutally honest, that's the thing I tell my students. So when you're working with people, you need to be brutally honest with them. So if you're working with me, or if you come to me for a coaching session, or if you come to me in my classes, I may tell you things which you don't want to hear, which you don't feel comfortable hearing, but you need to hear. Your friends will not tell you because they think you will get hurt. Your family will not tell you because they think it, you will not like it. But a good coach will not hide and will tell you that what you need to hear. Okay, so being brutally honest with your clients and with yourself is also something that prevents you from fearing a lot of things. So you need to, you become fearless. You need to operate from that fearless mindset. Okay, that's the attitude. And then constant and never ending improvement. If you have ever heard or read about Kaizen, or if you have a lot of people who come to me have heard or read Anthony Robbins, uski kitabon mein aapne padha hoga constant and never ending improvement. That comes from Kaizen. So constant and never ending improvement. Okay, and constantly improving yourself, learning on regular basis, developing yourself on regular basis. So it's not about कि मैंने ये training कर ली तो अब मुझे मजीद training की जरूरत नहीं है. This is what makes you a good coach. So you keep on learning. I keep on investing. मेरा एक routine है. For years I've had this. I often say मेरी एक addiction हो गई है. It's like, and my addiction is to read something every day or to listen to some audiobooks every day. और मेरे तकरीबन
एक ज़माना था कि मैं 15 से 20 मिनट रोज़ाना कुछ ना कुछ पढ़ता था। अब मेरी वो एडिक्शन इतनी हो गई कि मुझे 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ पढ़ रहा होता हूँ या कुछ सुन रहा होता हूँ। आई जस्ट कीप अपडेटिंग माई सेल्फ। ओके, सो it's just an addiction for me, literally an addiction. I'm saying it's an addiction because it seems like मैंने कल नहीं पढ़ा अगर तो फिर I feel like यार कुछ missing है. Okay, so I read a lot of books, I listen to a lot of things, but that's the part of constant and never ending improvement. So if I have learned something, and I find there is some element, I learn something more, and then I combine, and I can, it's like, so there is something in religion that I would study, and I study religious text, I study, मैं उलमा से भी सीखने की कोशिश करता रहता हूँ, मैं मुख्तलिफ कोर्सेज भी करता रहता हूँ, and I try to combine all of those things in a way that's applicable for me and for people around me and for people that I coach. Okay, so it's always, there is this constant process of never ending process of learning. So learning and unlearning, yes. Haram maghaz means spinal cord. I don't think so. सर ये कोर्स कितने महीने का है? Oh, we'll come to that, Samira. I'll talk about that. Just let me first give you, देखो ये है क्या चीज, एक चीज मैं और आप लोगों को बताऊं. I come across a lot of people. मैं आपको एक मेंटालिटी पहले समझाता हूँ. गरीब आदमी और अमीर आदमी, अब एक चीज और करो. अमीर आदमी भी दो आंखें, दो कान, दो इसी जिस्म, इसी तरह की जिस्म के साथ पैदा होता है. गरीब भी, वो जो गुर्बत में पैदा होता है और गरीब रहता है, वो भी उसी जिस्म के साथ, उन्हीं तमाम सलाहियतों के साथ पैदा होता है, उसी किस्म के रिसोर्सेज के साथ होता है. और जो उसी गुर्बत में रहने वाला कहीं अमीर हो जाता है उसमें भी. तो कहीं ना कोई जो ऐसी चीज होगी उस बंदे की, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो उसने ऐसा किया होगा कि अल्लाह ताला ने एक को नवाजा और दूसरे को नहीं नवाजा. कोई ना कोई, कहीं ना कहीं तो कोई डिस्टिंक्शंस हो रही होंगी. कुछ ना कुछ तो ऐसे डिफरेंसेस होंगे. जो डिफरेंसेस सामने आए हैं इंसानों की स्टडीज में, वो ये आए हैं कि जो लोग दुनिया में कामयाब होते हैं, माली तौर पे या अपने कारोबार में, खुशहाल होते हैं, उन लोगों का सोचने का तर्ज मुख्तलिफ होता है उन लोगों से जो नाकाम होते हैं. और वो लोग जो कामयाब होना चाहते हैं, खुशहाली हासिल करना चाहते हैं, वो माली खुशहाली हो या किसी दूसरे तौर पे, अगर वो अपने उस तर्ज को तब्दील करके दूसरे तर्ज को इख्तियार करें तो उनकी जिंदगियों में बेहतरी आना शुरू हो जाती है. ओके, बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर फर्ज करें कि आप अपने घर से निकल के अपने दफ्तर की तरफ जाते हैं या स्कूल की कॉलेज की तरफ जाते हैं, और जिस रास्ते पर आप जाते हैं उस रास्ते पर गड़े हैं और कांटे हैं, और आप उसमें से रोजाना फंसते हुए, और कीचड़ है, और वो कीचड़ आपके कपड़ों पे लगता है और आप बड़ी मुश्किल से वहां से पहुंचते हैं. आपको पता चलता है आप ही के मोहल्ले का एक और साथी है, वो भी आता है स्कूल और वो बिल्कुल फ्रेश होता है, उसके कपड़े भी साफ सुथरे होते हैं, उसको कांटे भी नहीं लगे होते हैं. तो फिर आप उससे पूछते हैं यार ये क्या चक्कर है, मैं भी, हम एक ही गली में रहते हैं, साथ साथ आते हैं, मगर तुम आते हो बड़े फ्रेश होते हो, मैं आता हूँ मेरा आशर हुआ होता है, इतना थका हुआ होता हूँ ऊंचे नीचे रास्तों में, बात क्या है? वो आपको बताता है कि जी मैं असल में, वो जो उसकी बराबर वाली गली है ना, मैं वो लेता हूँ और वो बिल्कुल साफ सुथरी है, मैं वहां से आता हूँ, बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है, बिल्कुल कपड़े भी साफ रहते हैं और रास्ता भी ठीक है, गली भी ठीक है. जब आपको पता चलता है, अगर आप फिर भी पहली वाली गली पे जाते रहे, फिर आप बोलें जी मेरी किस्मत खराब थी, या मुझे नजर लग गई थी, या मेरे बंदिश हो गई थी, तो ऑनेस्टली मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है. लेकिन अगर आपको पता चले कि एक रास्ता है और उस पे लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, और खुला हुआ है, और उस पे आप चलना शुरू कर दें, तो चांसेस आर कि आपकी अपनी जो सफर है वो अच्छा गुजरने लगेगा. इन जस्ट द सेम वे, वो लोग जो जिंदगी में प्रॉब्लम्स के अंदर होते हैं, और उनकी जो सोच का अंदाज होता है वो एक खास कांटेदार अंदाज में सोच रहे होते हैं, वो लोग जो जिंदगी में कामयाब होते हैं, उन्हीं माहौल में, उसी जगह पे वो अपनी सोच में कुछ तब्दीली लेकर आते हैं. Okay? और जो सोच में इन दोनों के फर्क होता है, एक छोटी सी आपको चीज बताऊं. जब एक गरीब आदमी जब खाने के लिए कहीं जाता है, तो उसके सामने जो मेन्यू होता है, तो वो पहले देखता है इसकी प्राइस क्या है. ओके,
वो प्राइस देखने के बाद फैसला करते हैं क्या खाना है। वो लोग जो अमीर होते हैं ना, वो देखते हैं मैंने खाना क्या है, एंड देन डिसाइड, if I can afford it or not. If not today, maybe the next time. But this is what I want to eat. This is what I want. आज मेरा बजट कम है तो मैं चलो आज ये चीज खा लूंगा, but this is what I really want. That's how they think. मैं देखता हूं मेरे पास आने वाले बहुत सारे लोग कोर्सेज के लिए आते हैं, उनका सबसे पहला सवाल क्या होता है? फीस कितनी है? किस चीज की फीस? पता है आपको? कोर्स में क्या है पता है आपको? उसका फायदा क्या है पता है आपको? कोर्स में क्या सीखेंगे पता है आपको? नहीं। बिकॉज उन्होंने पहले मालूम करा फीस कितनी है, उनको अच्छा फीस, ये तो मैं नहीं कर सकता। यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, देयर इज नो क्वेश्चन, आई विल नॉट आर्ग्यू विद दैट, because I don't take those people in my classes either. It's like there's a different kind of mindset you need. So I hope this makes sense. Does this make sense? But do you understand this? Okay, and this is, you go and apply this in anywhere in your life and you will see difference. Because until you change what's here, you will not see changes out there. अल्लाह ताला यही कहता है ना, तुम अपने अंदर तब्दीली पैदा करो, हालात तुम्हारे हम बदलेंगे। हम कहते हैं हालात हमारे बदलें तो फिर हम अपने आप को बदलेंगे। It doesn't work. It has never worked. So does this make sense? Please let me know. Type yes if it makes sense, or no if it doesn't make sense. If you have any comment, please go ahead and do that. Let me know. I hope you're getting some value, spending your time here with me. So I see number of yeses. Yes. Cool. Fantastic. Great. Excellent. Alhamdulillah, it makes sense to you. So let's explore this mindset a bit more. So mindset की जो बात कर रहे हैं इसमें, just like we go further, what else do we need? This mindset में you need belief on yourself. You need belief on the services you are offering. You need belief on the system that you're offering, that you're using. And यहाँ पर हम बात कर रहे हैं system की, NLP as a system. We are talking about just like clarity of your vision in your life. It's like what you really want to create in your life. We are talking about your mission in your life as a coach. If you want to start as a coach, what's your mission in your life? What values do you operate from? Because जब आपका attitude और आपका belief ये सही होता है, you become a powerful coach. When your attitude is right and you have clarity, you act easily. And when you have right beliefs and you have clarity, you have an ongoing motivation. ये जो issue होता है जिंदगी के अंदर, वो मैंने काम बड़े शौक से किया था, बड़े जोश में किया था, उसके बाद वो खत्म हो गया, बस जोश मेरा खत्म हो जाता है। वो शुरू में बड़ी एक्साइटमेंट होती है, जब मैं स्टार्ट करता हूँ ना तो बड़ा जोश होता है, और फिर वो खत्म हो जाता है। वो इस वजह से होता है, because there was no clarity of vision, there was no clarity in mission, no belief on self, or lack of belief on self, or lack of belief on what you were doing, and it results in this. So when you become a coach with me, the things, these are the things that I teach. These are the things that I cover in my program. Okay, these are the things that we work with. Okay, and many classes I don't take lots of people in my classes. My group sizes are small. I don't have lots of people. This has been that way from the very first program that I started teaching. I still follow that same pattern. I don't take a lot of people because I like to give individual attentions to people. So when we work with the people, it's like आपकी जो specific चीजें हैं, आपकी जो specific issues हैं, so sometimes
क्लास में मुख्तलिफ लोग होते हैं, किसी को माइंड सेट की ज्यादा जरूरत होती है, किसी को अपने माइंड सेट में, किसी को एटीट्यूड पे काम करने की ज्यादा जरूरत होती है, तो किसी को बिलीफ पे. सम पीपल हैव गुड एटीट्यूड. Generally, I take people who have the right attitude. So it's like the people have attitude, but they don't have the right belief system. Okay. Sometimes people do have the belief, but they don't have clarity of, vision and mission in their life. Sometimes people lack in all of those areas. So when हमारा जो first month होता है, उस first month में we work on these three things mainly. Okay. It's all about mindset. उसके बाद जो next month होता है, it's all about skill set. सो स्किल सेट के अंदर भी बहुत सारी चीजें उसमें फिर आ जाती हैं. ओके. सो जब हम स्किल सेट के ऊपर बात करते हैं, सो वेरी क्विकली, आई विल नॉट गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल्स हियर, बिकॉज ये सारी चीजें बहुत डिटेल की हैं और इसमें एक एक चीज, इट्स लाइक इफ आई स्टार्ट ओपनिंग वन ऑफ दीज, सो हमारा पूरा एक सेशन एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर हो सकता है. यानी ये सारा डिस्कशन बहुत इजीली हम एक स्पेसिफिक चीज पे, सो फॉर एग्जांपल बिलीफ पे, I had 2 sessions, which is like about more than 6-7 hour sessions on beliefs. Okay. So beliefs ka jo topic, it's such a huge topic. So if I start going into this, so, it's a thing. So skill set ki jab hum baat karte hain, first इसमें deep understanding, experiences and strategies, ये 3 चीजें इसके अंदर आ रही हैं. इसमें सबसे पहले deep understanding of human behavior, the themes in life, and working of the human mind. इन 3 चीजों की जो deep understanding है, that's part of your skill set. Knowing how humans really work, knowing how life works, how people experience what they experience. So a person comes to you, you're working as a coach, and the person comes to you and they present a problem, and with that problem they have a story. Your job is to understand कि वो जो स्टोरी अपनी सुना रहा है उसमें क्या चीज ट्रुथ, क्या चीज फैक्ट्स हैं और क्या चीज उसकी अपनी दिमाग की क्रिएशन है. एक छोटी सी मिसाल देता हूँ. फर्स्ट करो कि किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है. ओके. सो द फैक्ट पार्ट ऑफ दैट एक्सपीरियंस इज उसका मोबाइल चोरी हो गया. So people make a story about that. मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मेरा सब खत्म हो गया, मेरा सारा डेटा चला गया, सब कुछ छिन गया. That's the story. हकीकत क्या हुआ है? उसका मोबाइल छिना है. Now somebody loses a job. It's a bigger problem. Okay. Fact, I lost my job. Story, अब मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरे बच्चों की स्कूलों की फीसें नहीं जा सकेंगी, मेरा घर का किराया नहीं जा सकेगा, मैं बस बर्बाद हो गया, मुझे जिंदगी में कुछ नजर नहीं आ रहा, खुदकुशी के अलावा मेरे सामने कोई रास्ता नहीं है. That's a story, right? Now I can, it's like if I were a friend, I say नहीं नहीं देखो बुरी बात है, इस तरह से मत सोचो, अल्लाह ताला से उम्मीद रखो, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा. Okay. But unfortunately, friends have already tried this and it hasn't worked. How many of you can relate to this kind of thing, by the way? And then it's like दोस्तों ने सारे मशवरे दे दिए, घर वालों ने सारे मशवरे दे दिए, nothing has worked. If it was working, तो घर वाले कोच होते ना, कर रहे होते, भाई दोस्त कोचिंग कर रहे होते, मसला ही नहीं होता. हम दोस्त से किसी से बात करते, दोस्त कहते हैं हाँ यार कोई मसला नहीं है, देख मैं बताता हूँ. Okay? कोई जरूरत ही नहीं थी. So at the end, Naima says, I have to fight for myself. You don't have to fight with anyone. Okay. You have to be careful with the kind of language you use. देखो मेरी जो field है ना, neuro linguistic programming, so it's like programming your brain through language. When you are using this kind of language, I have to fight. Now you may be speaking metaphorically, but you don't know what you are creating in your head.
हम NLP में we don't talk about effective communication, we talk about effects of communication. मैंने आपसे शुरू में क्या कहा था कि it's like मेरी communication का मेरे जहन पे क्या इफेक्ट हो रहा है और मेरी communication का सामने वाले के जहन पे क्या इफेक्ट हो रहा है. Okay, that's a huge subject. It's a huge subject. Neuro-linguistics में जो linguistics है, that's the middle name that connects neuro and programming. That linguistics is the central thing. It's a huge subject. इसमें इतनी बारीकियां. You'll be, it's like, just think about this. अल्फाज की ताकत की बात करते हो ना. मैं और आप, हम मुसलमान, हम में से किसी ने अल्लाह या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? हमारा जीना मरना, हमारा ईमान, हमारी आखिरत, हमारे पास है क्या? कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम और अल्लाह के रसूल का कलाम हदीस की शक्ल में. अल्फाज, हमारा रिश्ते जुड़ते हैं अल्फाज पर. एक बार कबूल कहा, जिंदगी भर का लिए रिश्ता जुड़ गया, और इन्हीं अल्फाज पे रिश्ते टूटते हैं. ये अल्फाज जो है, ये इतनी पावरफुल चीजें, वी हैव नो आइडिया हम इसके साथ क्या कर रहे हैं और हम अपने साथ क्या करें उन अल्फाजों के जरिए. So when it's like the kind of language that we are using, sometimes we think we are using metaphorical language, but that the way brain processes information, उसके जो हमारे जहन पे effects होते हैं, we are not realizing कि हमारी language क्या कर रही है. I pay a lot of attention. It's like, so when I'm working with people, I pay attention to the language that people use. And I help them. This is what it's like. So I am using a language which is taking me in this path of, it's like gadhe and kaante and us sare path ke upar le ja rahi hai meri zindagi ko. And I notice that this person is using this, and I help them change that. So they start using language that makes their life smoother, and they start seeing more clarity in their life. And that's what my job is. And that's what I teach to my students as well. Okay. It's a skill that takes a little while to learn. So then experiences, your personal experiences, your professional experiences, and experiences of other people. And then your strategies, the NLP strategies that you will learn, powerful questions and coaching tools, all of these things, they make part of your skill set. When you have deep understanding and you combine them with your experiences, you become authority in your field, in your area, okay, in your niche. When you have deep understanding and you write strategies, you are able to do deep inner work with people. And when you have combine your strategies with your experiences, you become impactful. You are able to create an impact on people you work with. Okay, it's not about impacting masses, creating a massive change. Anthony Robbins की हमने चीजें सुन के और ये motivational speakers की बातें सुन के हमने दिमाग हमारे खराब हो गए. It's like creating that massive change. Okay, ये जो massive tone है उसको तो कम कर नहीं सके, पता नहीं massive change कौन सी लेकर आना चाहते हैं. Okay, so all of these things, you learn this. This is, by the way, do you think this is something कि आप एक दिन में से like आपकी pituitary gland को आपकी third eye क्यों करेंगे और ये सारी चीजें आपके दिमाग में activate हो जाएंगी? What do you think? है कोई like मैं ऐसा होना कितना अच्छा होना मुझे अगर ये चीज पता चल जाए, स्टूडेंट आए मैं आगे उसके सर पे मारूं. चलो भाई नेक्स्ट भाई इनको सर्टिफिकेट दे देना, इनके सर पे हमने मार दिया था थोड़ा. Okay, unfortunately things don't work that way, my friend. Okay. A lot of times a lot of things seem that way, but it doesn't. Things work differently in this world. जी समीरा, काश इतनी जल्दी सीख पाती. कितना आसान होता ना समीरा मेरे लिए भी यार. चलो इस लाइक मैं हथौड़े बेचने का किराए वो काम करता ना, फिर ये सारी चीजें हथौड़ा टक लगाया ऐसे यहाँ पे लगा, इसका ये NLP प्रोग्राम. ओके, great things demand great investment, absolutely. And that investment is investment of time, investment of energy, lot of energy, lots of time. Okay? It doesn't happen in a day. It takes a lot of time. It takes a lot of energy.
and a lot more actually. हमारी ख्वाहिश होती है कि हम चाहते हैं कि चीजें जो है ना वो इंस्टेंटली होने लगे. बस हम आंखें बंद करें. मेरे पास I do hypnosis. I've been doing hypnosis for years, and uh, Afia, I don't want to comment on that. I didn't comment on that even then. I do remember what you said, but I don't want to comment on that. Remember, Afia, I was the country supervisor for Silva Ultramind at that time, and I have been, I used to teach those courses, but I don't want to comment on that. Maybe some other time, but that's a mistake. Okay, so this is the place where this is my office, by the way. Jiski आपको एक तस्वीर पीछे नजर आ रही है. These are some of the certificates. I have taken many trainings. मेरे पास most of the trainings that I have taken, I have no certificates. These are just some of those certificates which are hanging in my office. This is the background of my classroom. This is just to मेरे कुछ students यहाँ पे हैं जिन्होंने इस क्लास में क्लास अटेंड की है. So seeing them here, just reminding them of some of the, just firing your old anchors. So, any questions, by the way? I think I can take some of your questions up यहाँ पर. Do you have any questions? Anything that I have discussed so far? मेरे पास कुछ questions आप लोगों के आए भी थे when I asked in the groups. कुछ लोगों ने कुछ questions किए थे. Let me see. मेरे दूसरे मोबाइल में है. Can we coach our close relatives? You can coach anyone who wants to be coached by you. So the first thing is the person's willingness to be coached. A lot of times people come, call me and ask me, it's like they want me to coach someone, and because they think that I can be helpful for them. So my first question always is, do they want my coaching or not? Okay, so if they don't want my coaching, I can't help. So you can coach anyone if and when they want your coaching. So Wajahat, I have a question. I'm getting the impression that we cannot overlap these aspects of simultaneously. Is it? I don't know what you mean by overlap. Okay. And which aspects are you talking about? Because there is an overlap as far as what I'm talking about. There is an overlap between these. They're operating within the same person, and you use all of them all at the same time. देखो जब हम चीजें सीख रहे होते हैं ना, जैसे हमने इट्स लाइक हमने सीखा ABCD, तो हमने एक अल्फाबेट अलग अलग सीखा. बट व्हेन यू मेक वर्ड्स, तो इनिशियली आपने सीखा CAT cat, BAT bat, cat माने बिल्ली, bat माने बल्ला, and then you start making small sentences. Cat sat on the mat. Now it's a combination integration of those simple, वही 26 अल्फाबेट्स हैं जिसको आप बार बार रिपीट करके पूरी फिलॉसफीज बना देते हैं. पर जब आप सीख रहे होते हैं तो उन चीजों को, सो मैं जब आपको जो the reason I'm just presenting those small bits to you, so it makes more sense, becomes more digestible. पर जब इनकी implementation की बात आती है, you use them, all of them together. So जैसे मैं बात कर रहा हूँ communication की ना, so communication में verbal and non-verbal दोनों चीजें आती हैं. As I am talking to you right now in this session, I'm not only using words, I'm doing a lot of things with my expressions, with my body language, with my gestures, with my tonality, and all of these things are part of my communication. Okay, so for example, ऐसे NLP जो है ये इंतहाई इस्तेमाल की बहुत अच्छी चीज़ है, और इसके ज़रिए आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं, और इससे आप अपने अंदर जो है वो अपने अंदर को से क्या कहते हैं वो आप कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी ला सकते हैं. ओके,
Does it have, will it make any sense? I'm using really good words. Okay, so it's not about words. There's a lot that goes within that. Like, if I want to explain, I'll have to go through each one of them. How is NLP different from traditional coaching? NLP follows जो NLP का जो model है itself, that's the same, interestingly, the same model that is used in coaching. So NLP में अगर आप change की बात करते हैं, let me quickly see if I can find something that will give you a better understanding on this. I'm just trying to open something for you which may be of some benefit. आपके सवाल का आपको जवाब ज़्यादा बेहतर तरीके से मिल सकेगा, hopefully. Okay, so देखिए, कोचिंग में जो हम बात कर रहे हैं, कोचिंग में हमारे पास कोई it's like a person comes to us. So you come to me for coaching, for example, and you tell me, I have this condition right now in my life, in my business, in my relationships, wherever that may be, and I'm not happy with this. This is the reason you're talking to me. It's like लोग डॉक्टर के पास कब जाते हैं, बीमार होते हैं तब जाते हैं ना, तो कोच के पास कब जाते हैं, when they have some issues in their life. So, and then you come to me and you say, I have this situation, this financial situation, and I don't want this, I want something else. This is what I want. So you have what in NLP we say, you have what we call a present state, and there is something which is called a desired state. Okay, so you have a situation, the present condition, and then you have what we call a desired situation. You want to change. And in NLP, we apply, ये जो बीच में gap होता है इन दोनों के, we call this problem space, और इस problem space में we apply NLP. Okay, different techniques of NLP, different processes of NLP, depending on what the person needs. Okay, and then to help the person change. This is exactly what we do in coaching. So a coachee comes to you as a coach and they say, I have this problem and I want to get rid of this problem, or I have this goal right now, I'm making this much money and I want to make this much. Okay, so I have this desired goal and I want you to coach me to get from where I am to where I want to be. So this is my present state and this is my desired state. I want to get into that desired state, and you help me get into that desired state. That's what you do in coaching. Okay, so coaching or NLP ka jo basic structure is there, completely aligned with each other. This is why NLP is very effective in coaching. I hope that answers your question. So let me see. ये कोर्स 1 month का नहीं है, ये कोर्स तकरीबन 6 महीने का हो जाएगा, जिसके अंदर first module 1 महीने का होगा, then दूसरा module, and then for 6 months we have individual one-to-one group coaching sessions for next 6 months, which is about developing your business. How to be a part of this program? Is it face-to-face or is it online? It is online, face-to-face. So it's like I'll be conducting this course, inshallah ta'ala. Iski sari details are on my website. If you go to my website, you will find all the details. Meri jo website hai, it's first-institute.com. If you go to first-institute.com, you will find all the details. So I'll quick share this. You can go here. Is pe you will see, यहाँ पे अभी pre-order लिखा है NLP coach. If you go and click on this, तो इसमें आपको इस कोर्स की सारी तफसीलात जो हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी. इसके अंदर क्या कुछ है, इसकी क्या dates हैं, you will find all of those details here. इसका जो schedule है, you will find this, and then इसकी जो investment है, and everything is here. Okay, इसके जो sign up के options हैं, you can do this. So इसमें sign up में different options हैं. You can sign up for the program and you can buy just the recording. You can sign up so you can get recording, and you can sign up so you can attend live classes only. So you have multiple options. यानी कि अगर आप कहते हैं जी मैंने खाली live classes attend करनी है, I don't need any recording after that,
So there's a price for that. If you say I want to attend classes and I also want recording ताकि मैं बाद में उसको review करता रहूं या करती रहूं, so lifetime access के लिए you will have, there's a different price for that. And you say, gee, I don't want to, I don't have time, it doesn't suit me for whatever reason, so I just want कि मुझे खाली recording मिल जाए and I just want to take recordings, and there's a price for that. You will find all of those details on my website. So what are the other questions? What are the parameters that determine a successful coaching session? How will it helps people get the results they come for? That's the basic thing. But that will vary from session to session and person to person and situation to situation. But basically, जो course का जो उसका outcome है, the person is able to get that. Sometimes being brutally honest becomes the end of conversation, especially in relationship. Then what to do? Start, if you do it with rapport, that's the first thing. See, when you're learning these things, the first thing is to do these things with rapport. Okay, if you don't have rapport, then it will backfire. Is there any relation between psychology and NLP? Well, not really, because psychology and NLP, it's like the relationship between text messaging and or say Morse code and WhatsApp. So there's a difference. Both are ways of doing things, but NLP is not about therapy. NLP has applications in therapy. A lot of psychologists have learned NLP. And I've personally trained many psychologists, and there are many psychologists here in America who have trained in NLP and doing NLP. But NLP is not about therapy. NLP is about personal freedom. Okay? NLP is का जो एक orientation थोड़ी सी different है. Like, so in general, therapy में you look for the problems in the past, okay, and the causes of problem. In NLP and in coaching, we look at where you want to go. So it's like, so if I was a therapist and you come to me and you have a problem, I would try to find out why you have the problem, where it started, when started, what happened, what led to this problem. When I'm working as a coach or as an NLP coach specifically, I see where you want to be and what we can do to help you get where you want to be. Okay, so rather than looking into your past, we look at your future and chalk out a plan so you can get where you want to be, either mentally, emotionally, personally, professionally, financially. So that's the big difference. Okay, so so Nabila says, who lost a job, how can afford a coach? There are many coaches who offer, initial free coaching sessions. Okay. And this is again, if you have lost a job and you think you can't afford, you must get a coach, because that's a limitation in your mind. This is when you need a coach. This is exactly when you need a coach. When you are buying into this limitation, oh, I don't have money, you need a coach, because you are accepting a limitation that you must get rid of so you can move forward. Because your friends will tell you, हाँ यार तू सही कह रहा है या सही कह रही है, अभी तो ऐसे हालात में तो कहाँ खर्चा होगा, मगर अगर आज मोबाइल टूट जाए ना आपका, उन्हीं हालात में उसी जॉब के बगैर, you will go and buy a new mobile. Okay, I can relate. However, the problems are genuine for unemployed people. Can you help me understand? I hope I made you understand. I just answered that question. And the thing is, it's like you're assuming that people who don't have, who don't have a job have genuine problems, and people who have a job don't have genuine problems. They have fake problems. What do you think? Here's the thing, my friend. आपको आपके problems genuine लगते हैं, मुझे मेरे problems genuine लगते हैं. Okay, it's like, who has artificial problems? Like who's so creative that creates artificial problems for themselves
and then try to deal with them. Okay, and those people would need therapy. Okay, and then practice. You listen tapping therapy. My God, आप लोग, it's like ये 30 साल पुरानी बात है जो आप मुझे बता रहे हैं. मैंने 1999 में I did my NLP practitioner master practitioner training in England, Leicester में. तो मेरी जो trainer है, her name she's still alive, she's in touch with me still. Her name is Jo Cooper. She was the first trainer of Kalahan technique, the thought field therapy, जिसे आज आप tapping technique कहते हैं. And that's when she taught a number of those tapping sequences to us. I learned them many, many years ago. Great things demand great investment, hand tapping. हम बहुत सारी चीजें होती हैं. क्या होता है जब हमने कोई पुरानी किताब हम पढ़ते हैं ना, जैसे हमारे में देखते हैं बहुत सारे 7 Habits of Highly Effective People. Okay. 7 Habits of Highly Effective People का जो ऑथर था उसने वो किताब कोई I think 1992 में शायद ना और not या 93 में शायद मैंने पढ़ी थी वो किताब. और it's like many years, मुझे exact याद नहीं. Then he wrote a book called The 8th Habit. हमारे अभी तक लोग 7 Habits पे बात कर रहे होते हैं. And as if this is something new. How to be more disciplined as a coach. Get a coach, hire a coach, work with a coach. How is NLP different from traditional coaching? I answered that. यकीन इससे खुद भी coach कर पाएंगे. I think you're saying, I'm very sorry, वैसे I'm really poor in reading Roman. So I try my best. यकीनन इससे हम खुद को भी coach कर पाएंगे. Yes, inshallah, you will definitely be. But still, a good coach needs a coach. I still work with coaches. Okay. It would be dishonest on my part if I ask you to hire me as a coach or to learn, to become a coach, and I don't hire a coach myself. It doesn't work that way. Okay. If I want to be effective in what I'm doing, the first thing I have to do it myself. I want to ask about scientific facts of NLP. People say it lacks scientific evidence. Absolutely, they're right. So I have a question. How to be part of the program? I just shared that with you. Is there any relation between? Yeah, it's like पिछले question सामने ला रहे हो automatically. The course schedule is on website is of 4 weeks only. According to you, it's a 6 months course. Yeah, so it's like ये जो program है, अगर आप उसको देखें, there is a it also says कि जो program है, it has 6 months का आगे, which will be वो dates जो हैं. Okay. Coaching course in NLP, what do we need to work on ourselves before it? When you come to the course, in my course, that you work on yourself first. हमारा पहला पूरा महीना जो होता है, it is about you, about your mindset. It's all about working yourself. So it's before you start working with other people, you start working on yourself. You do learn skills from the first session to apply things on other people as well. But your main focus is on yourself. So it's like how you are internally when you're working with other people. So you practice working with other people, but practicing on your own self. Okay, being in the right state of mind, operating from the right belief system, being in the right physiology. So mentally, emotionally, you're being present. So you work on your presence first. So you bring the right kind of presence in a coaching session, and the rest of things follow. If you don't bring the right kind of presence in any communication, आपके अगर if you're a parent, आपका बच्चा आता है, आपसे बात करता है और आप मोबाइल पे लगे हुए, and you're not giving any attention, you're not present with your child. The same is with coaching. So it's like if I am talking to you right now, and rather than talking to you,
I start going into my, it's like my WhatsApp, checking my WhatsApp and my messages, I'll not be with you. I'll not be able to connect with you. So for me to connect with you, I have to make sure that I am, present. I bring that kind of presence for you. Okay, then सिल्वा NLP दोनों में फर्क क्या है? बहुत फर्क है, इस वक्त उसका टाइम नहीं है. I used to teach सिल्वा के जो कोर्सेज हैं पाकिस्तान में, जो सिल्वा अल्ट्रा माइंड के जितने इंस्ट्रक्टर्स हैं, I trained them. Okay, I was the only person authorized in Pakistan to teach Silva instructors courses. So I trained instructors who teach those courses. I don't teach them anymore. But मेरी website पे, if you go to my YouTube channel, वहाँ पर YouTube पे I have about more than 300 videos. By the way, I just checked yesterday. I was thinking I have about like 200 videos. मैंने कल देखा I have like 309 videos. It's like, I said cool, 300. So I have over 300 videos. उसमें there are some videos about Silva Ultramind और उसकी introduction. Go and check them. Okay. बजाय इसके मैं वो चीजें आपको यहाँ पे बताऊं, go take your time and watch those videos. And is NLP really vast field? No, I am attracting money. Yeah, NLP is a vast field. So I don't see many questions, any more questions. Is there any other question? Do you have a question? Anything anyone wants to ask before we call the session off? Please let me know. कोई question किसी के जहन में कोई सवाल हो, please ask. Feel free to ask. If I can, I will answer. I do not have answers to all the questions. जी, अगर आप रिकॉर्डिंग भी लेंगे, you will still get my, मेरे जितने भी कोर्सेज हैं, मेरे जो, if you go to my website, आप मेरी वेबसाइट पे देखेंगे, मेरे जो भी कोर्सेज हैं उनके अंदर भी, और मेरे जितने कोर्सेज हैं, I do this, I have these exclusive WhatsApp groups, and उसके अंदर you become part of that group, and then you can ask me questions. Even if you're buying recording, you can ask me questions. You will have any number of questions while you're going through those recordings. You can always ask. There are people here right now, Iswat, who are taking my different courses right now, and they keep on asking. कौन कौन है इस वक्त यहाँ पे? Can you just raise your digital hands? Okay. So Faizan, Yasmin, we have Serish is here, and Abdul Rahman, and I see Munir is here. I see there are a number of people that Iram is here. Okay, so Alia is here. So there are people. So if they have any questions, okay, they ask. हमारा पाकिस्तान में जो लोग हैं उनके हिसाब से इस वक्त 9 घंटे का डिफरेंस है, एक महीने बाद तकरीबन 10 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा. तो but whenever I see a message and if I can, I do answer their questions. Sometimes I coach them rather than giving a spoon feeding them with answers. I coach them so they find their answers themselves. I don't always spoon feed. I don't like spoon feeding my students. I want people to use their own heads, their own brains. Okay. That's what I teach. Like, what good is it? It's like if I just keep spoon feeding them and they don't learn anything and they don't do anything for themselves. So my job as a trainer, I believe, is to help people find answers that are already within them. Okay, so thank you very much. My website is first-institute.com. I'll just quickly share that link with you. मैं आपके साथ ग्रुप में यहाँ पे शेयर कर देता हूँ. So
check your chat. It's first-institute.com. अगर आप it's like if आप इस पे जाएंगे, जो मेरा मेन पेज है, वहाँ पर आपको मेरे सारे कोर्सेज की दूसरे बहुत सारे कोर्सेज हैं. I have previous programs की recordings are also available that you can get. मेरा जो NLP का कोर्स है, मेरा NLP practitioner training जो है, complete program की recording available है as a home study course. You can get that. उस पर इस वक्त 40% डिस्काउंट भी है. मेरा जो NLP मास्टर प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग है, वो कंप्लीट प्रोग्राम अवेलेबल है. इट्स उसकी पूरी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है एंड यू कैन गेट दैट. उस पर भी 40% डिस्काउंट है. मेरा प्रीवियस लाइफ कोच सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग है, मास्टर लाइफ कोच सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग है, हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग है, hypnosis trainers training hai. If any one of you is interested in becoming an instructor or a trainer of hypnosis or just a trainer yourself and improve your training skills, मेरा program है charismatic trainers training. You have that. और उन सारे programs में, there's a module for business. Not in NLP practitioner, master practitioner, but hypnosis practitioner or life coach and master life coach and charismatic trainers training. You will learn. It's like there are people who are doing it. Alhamdulillah. I have thousands of students all over the world. So people who are doing these courses, मेरी website पे, so there are about 3,000 students who are taking these courses. So different courses में मुख्तलिफ लोग हैं. मेरे हर कोर्स के लिए अलग अलग ग्रुप्स हैं. So people just keep asking me and I try to answer as many questions as I can. NLP में मेडिटेशन नहीं है. आप NLP में जो चाहें आप डाल लें. आपको किसने मना किया? मेडिटेशन करना चाहते हैं आप कीजिए, किसी ने नहीं रोका आपको. परेशानी की बात ही नहीं है, ज़रूर करना है. So thank you very much. Thank you very much everyone. मैं इंशाल्लाह जो मेरा व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बनाया था, I'll share these links on that as well if you are in that. अगर आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं है, प्लीज डू सेंड मी योर नेम, योर फुल नेम, एंड प्लीज जब भी मुझे मैसेज करें, सेंड मी योर नेम, योर फुल नेम, बिकॉज मुझे नहीं पता होता. अचानक से किसी का मैसेज आता है और मुझे नहीं पता कि कौन है, आदमी है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, एंड दे हैव अ क्वेश्चन, बिकॉज इट डिपेंड्स कि कौन पूछने वाला है, उसको उसके हिसाब से मैं जवाब दूं. एंड आई एम नॉट अ गूगल सर्च इंजन जिसका पास आपके सवालात के जवाब हो. इफ यू हैव अ क्वेश्चन जिसका आंसर आपको गूगल पे नहीं मिलता, तो फिर आप मेरे पास आइएगा. ओके, इफ यू कैन फाइंड इट ऑन गूगल, डोंट आस्क मी. इफ यू हैव अ क्वेश्चन अबाउट माय कोर्सेज, अबाउट व्हाट आई डू, माय सर्विसेज, फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग. Okay, if you have a question, general question, go and search Google. But whenever you send me any message, send me your name please and save my number, so I'll add you to my list ताकि आपको in future मेरे messages आते रहे. मैं कभी भी इस तरह के sessions करूं या कोई भी दूसरे sessions करूं, you will get my messages if you have my number saved. If you don't have my number saved, you will not get that. And you have, I believe, my number. It's 0300 219 8031. I'll repeat. 92 पाकिस्तान का कोड. ये मैं आपको व्हाट्सएप के लिए बता रहा हूँ. इस पे अगर आप कॉल करेंगे, दिस सेम इज इन पाकिस्तान, and I'll not receive this call. I'll not see text messages on this call. Only WhatsApp. I use WhatsApp on this number here in the US. मेरा जो ये नंबर पाकिस्तान में है, so इस पे मुझे कॉल नहीं कर सकते आप. आप WhatsApp कॉल कर सकते हैं, बट नॉर्मल कॉल नहीं कर सकते. 923002198031. Okay, you can call me or you can send me a message, WhatsApp message on this. Inshallah, if and whenever I can, I'll answer. So thank you very much everyone for joining me today. I hope it was useful for you. I hope it was beneficial for you. Thank you for those of you who joined on YouTube. And inshallah ta'ala zindagi rahi. So I'll see you.